Ladies and gentlemen, this is Pressing Matters brought to you by On the Mic. Today we have a very, very special guest. It's Yasir Mahmood, Chairman of Global Soccer Ventures, GSV. नाम से ही आपको पता लग गया होगा, याद आ गया होगा about the Pakistan Football League and the nationwide football trials that they are organizing right now. If you haven't checked it out, we did a fantastic episode with Zaib Khan on GSV's plans, specifically regarding the Pakistan Football League and reviving Pakistani football through their ecosystem-based and infrastructure-based system जो वो लेकर आना चाह रहे हैं. Thank you so much, Yasir Saab, for joining me on this one. It's a pleasure to have you on. Thank you, ji. Aapka, it's a pleasure to be with you guys, and let's hope in this interview will go well. Yeah, definitely. I think शुरू हम उसी बात से करते हैं जो सारे आजकल जिसकी बात करें. माइकल ओवन, द इंग्लिश लेजेंड, फॉर्मर बैलन डी'ओर विनर, वो पाकिस्तान जो है उनकी विजिट हुई है. हाउ हैज़ दैट बिन फॉर यू एंड GSV एज अ होल? I think it was a landmark, honestly speaking, because Pakistan में इस तरह की sporting personality का आना, it's a soft image for the country as well. But for us, being part of Global Soccer Ventures, it set us a landmark as well. At the same time, it's a little bit scary for us as well कि हमने बार अपनी खुद इतनी ऊंची रख दी है कि आगे हम क्या लाएंगे. That is a big question mark for us. But still, we are working. We are thinking on what will we bring next, inshallah. And it will be a surprise for everybody. I'm sure Michael Owen himself was a pretty big surprise जब वो उनको announce किया गया था. So generally part of his visit was obviously unveiling the soccer city at NED University in Karachi. And that is one of the main things that Zaib also mentioned in the podcast that we did, कि you want to have your football operations out of a state of the art stadium. तो उसके plans के बारे में अगर आप थोड़ा expand करें कि what are the plans for the stadium right now, और obviously UEFA standard की भी बात हुई, तो how is that coming along? उसमें जो basic homework था तो वो तो हमने we have completed it long while ago. चूंकि उसमें जर्मन इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, इंटरनेशनल कुछ कंपनीज इन्वॉल्व थी, डिजाइन्स जो हमने बाहर से करवाए वो इन्वॉल्व थे लोग, तो उसका होमवर्क तो हम बहुत पहले कर चुके थे. द ओनली माइकल ओवन के आने से ये हुआ कि उसके एक तो लोगों को तक जो मैसेज जाना था वो बड़ा लाउड एंड क्लियर चला गया है कि वी आर गेटिंग सीरियस नाउ व्हाट वी डूइंग, और माइकल ओवन ने ही उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है. सो इंशाल्लाह वी विल सी अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम वेरी सून इन पाकिस्तान. अच्छा, पाकिस्तान में ना जब हमने सारा फुटबॉल के अंदर जो है वो फैसला किया कि वी विल बी इन्वेस्टिंग इन फुटबॉल, वी विल बी changing the football history in Pakistan, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंफ्रास्ट्रक्चर का आना शुरू हो गया था. That we had a look at different stadiums, different options, but पाकिस्तान में उस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम अवेलेबल ही नहीं था जिसके अंदर लीग करवाई जा सके, जिसके अंदर मैसेजेस बड़े लेवल के जो है उन मैचेस करवाए जा सके. So then we had no other option to create that infrastructure, or that become a part of our ecosystem as well. Fantastic. And obviously आपने जिस तरह के का इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और अब कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो what is there a timeline for the completion, because obviously PFL and everything rests on the stadium being built and football operations starting, तो उसकी completion या उसकी timeline क्या है आपके ज़हन में? We are targeting 150 days and inshallah it will be completed in that time. बाकी है कि ऑलरेडी उसके लिए वेंडर्स बीन एलोकेटेड, उसके लिए जो है हम ऑलरेडी हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह पीपल विल सी प्रोग्रेस प्रीटी मच सून ऑन द ग्राउंड एज़ वेल. Fantastic. And obviously part of the football ecosystem जो आप बहुत heavily जिस पे emphasize कर रहे हैं, because one of the things that is missing in Pakistani football is के पूरा ecosystem ही नहीं बना हुआ, infrastructure, media, marketing, all of those angles are missing क्योंकि इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं है. तो Group M and 10 Sports are on board. This was also announced while Michael Owen was here. So can you give us details and updates on that कि ecosystem wise और marketing wise आप लोगों ने क्या progress किया, what are the plans there? अच्छा, if I'll take you इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊँ ना, तो जब हमने ये सारे प्लान्स अनवेल किए तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि this might not be possible in Pakistan.
इवन जब मैंने अपनी वाइफ से ये प्लान शेयर किया कि यार हम पाकिस्तान में लीग करवाने लगे, माय वाइफ इज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, तो फोर्थ जनरेशन ब्रिटिश पाकिस्तानी, शी Right. फॉलोज लिवरपूल। तो Me too. उससे भी जब हम Nice choice. डोंट वरी आई एम नॉट। I'm a Forest fan, by the way, Nottingham Forest. Oh, nice, nice, nice. That's great. So I'm pretty much old school. या नाइजल क्लफ एंड आई थिंक अब जाके उनका थोड़ा सूरत हाल बेहतर हुई है, बीच में तो इट वाज क्वाइट बैड एक्चुअली. हाँ, वो one of the reasons our owner Nigel Doughty passed away in a heli crash. So उसके बाद एकदम जो है ना ओनरशिप्स के अंदर क्राइसिस आना शुरू हो गए थे और काफी प्रॉब्लम्स थी, बट आई थिंक दे आर सेटलिंग डाउन नाउ एंड they got very strong history in 80s and 70s, so let's hope for the best. तो जब उनसे डिस्कशन होती है, जब डिस्कस हुआ तो इवन वो कह रही थी किस काम में घुसने लगे हो, ये why you wasting so much money and effort and all this stuff. Because nobody believed us, honestly speaking. हमारी कॉर्पोरेट से भी बात होती थी, दोस्तों से भी बात होती थी. इवन मैं उस दिन एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था तो मैंने उससे एक एग्जांपल दी. मैंने कहा यार हमारे दोस्तों में कह रहे थे कि आप लोग पॉलिटिशियन हो गए. मैंने कहा पॉलिटिशियन कैसे हो गए? उसने कहा आपकी बातें सुन के मजा बड़ा आता है, मतलब कुछ नहीं होता. Honestly, that was the situation. So how did you turn that around? How did you turn that around? Because शुरू में प्लान सुनते हुए काफ़ी स्केप्टिकल होंगे. Even before the Zev episode, I was like कि फ्रेंचाइज लीग की बातें इतने लोगों ने की हैं, but there are so many questions, so many things that people are, you know, कि किस तरह होगा. I think सबसे बड़ी चीज जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी है. If your vision is right, और विजन के बारे में मैंने ऑलरेडी भी एग्जांपल एक जगह कोट की है. विजन के बारे में वन ऑफ माय मेंटर्स ऑलवेज टेल मी कि पुत्र जदों ख्याली पुलाव पकाओ बोटियां खुलियां पाओ. So our vision was very clear, very large, and we were thinking about long term. We were not here to make money in short term. But with the passage of time, now you can see, especially in last 2 to 3 weeks, अब ये 2 से 3 हफ्ते जो लास्ट गुजरे हैं, इसके लिए मेहनत पिछले 1.5 साल से हो रही है. Now people start believing us. Now people start coming back to us. जिनसे हमने पहले कांटेक्ट किया था, इवन वो कॉर्पोरेट है, कमर्शियल एंटिटीज हैं, प्रोस्पेक्ट फ्रेंचाइज ओनर हैं, they all started coming back to us, which is a very positive sign. और इसकी वजह से जो हमारा अपना हौसला है वो भी बड़ा बुलंद हुआ है कि now we can see कि यार now people start supporting us. देखें, इससे पहले तो जो फुटबॉल के फैंस हैं, yes they want something, so they will support you. But will they believe you? There were ifs and buts. There were question marks. But now they start believing us. Now the whole country as a whole start believing us. Government start believing us. So which is a very positive sign. And I think अभी ये जो currently issues के अंदर जो भी आपने discuss किया, Group M और 10 Sports, ये भी उसकी एक stamp है कि जब इस तरह के बड़े ग्रुप्स आपके साथ आना शुरू हो जाएं. I think 10 Sports is पाकिस्तान में sports channels में pioneers है, और स्पेशली फुटबॉल स्पोर्ट्स के हवाले से दे आर स्टिल लीडिंग चैनल इन पाकिस्तान. उनका आना साथ, और फिर ग्रुप एम जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कॉर्पोरेट में, और उसके बाद जो इंटरनेशनली उनकी जो मदर कंपनी है, दे आर ग्लोबली लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. सो वी आर डूइंग समथिंग राइट, एंड आवर टीम की जो सबसे खास बात रही है 1.5 साल के अंदर कंसिस्टेंट रहे. व्हाटएवर वी सेड वी आर डूइंग इट एट द मोमेंट. So that's why market start trusting us. And I think इसी वजह से we can see कि हमारी अपनी टीम के अंदर, हमारे अपने अंदर जो है positivity has been increased to a completely new level. So we are very hopeful कि results will change as well. या इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली. आई थिंक ये आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत you hit the nail on the head, because Michael Owen itself was not only a landmark moment for Pakistan but also for GSV and your operations, but internally and externally, because इससे ही लोगों को पता चला है कि ठीक है, इनिशिएट वो अनाउंस करना और सब कुछ करना, that had its own, you know, उसका भी एक काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी, बट टू have the person here, और वो he has been involved in everything, that is another breakthrough moment. So just to circle back on that, what was his reaction to seeing everything, the soccer city, and you know, I think he went to Liari as well and saw the culture over there. So what was that like? What was his reaction to Pakistan? I think there were certain, इसके अगर हम डिवाइड करें, फर्स्ट उसका जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट था वो क्या गया. मैं आपको एक एग्जांपल दूं.
I was sitting with him, and then he received a call. I'm not going to mention the name, but then he received a call from a very renowned footballer, uh, and he's very, very renowned. Defender. I'll give you that much. So uski call आई, and he picked up the call. He picked up the call, and he goes. He told me, like, they were having a chat, and then after that, Michael Owen told me that he was asking what you guys are doing in Pakistan. Is all over the media internationally. So जो हमारा पहला target था, obviously he's a legend, but at the same time these things matter for everybody, for their viewership, for their future prospect. ये सारी चीजें matter करती हैं. So he was very happy that when you start getting calls from your friends and families who are not in Pakistan, Yeah. you are doing something positive, you are doing something right, which is very admirable. So एक तो ये कि इसमें सबसे बड़ी चीज जो थी वो मीडिया की सपोर्ट बहुत अच्छी रही है. ओवरऑल मीडिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है. We had a it becomes as a very positive story in Pakistan. देखिए हमारे ओवरऑल स्पोर्ट्स अरीना में या ओवरऑल पाकिस्तानी कल्चर में पॉजिटिव स्टोरीज रियली मैटर्स फॉर अस, स्पेशली फॉर पब्लिक, फॉर यू एंड मी, फॉर कॉमन मैन. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे गिव यू अ पॉजिटिव वाइब, एंड दैट ये किसी ना किसी सूरत में जो है वो आपके एटीट्यूड, टेम्परामेंट, लाइफस्टाइल, सारी चीजों पे ये इम्पैक्ट करती है. सो दैट बिकम अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी. अच्छा, Michael Owen as a person, I had a opportunity in past as well to deal with some celebrities, but I never had opportunity to meet such a humble person, such a gentle and kind person. It was amazing. It was a good experience to travel with him. It was a good experience to share vision with him, and he was very well impressed with the culture of Liari. And we will give you a very good news soon, inshallah. He will be doing something apart from league. We will be doing something in Liari from our CSR side as well very soon. Fantastic. That's great. I'm so excited to see कि लियारी के अंदर क्या होता है, because obviously वहाँ पे फुटबॉल कल्चर इतना ज़्यादा जो है established है, but it's not been tapped into commercially. That in itself, पाकिस्तान की लोग बात करते हैं कि इतनी बड़ी मार्केट है, लियारी itself is a sub market on its own in terms of football, I think. So really excited for that. The other thing that's dominating the headlines these days related to GSV is the next gen trials that you're having. For people who don't, next gen trials are happening alongside Kamyab Jawan Sports Tribe, the program initiated by the government, and St. Patrick's Athletic FC from Ireland. Or 20 players जो हैं वो select होंगे from across the country to take and train at St. Patrick's. और ये सारा कुछ जो है, it is led by UEFA licensed coach Karel Fry. I hope I pronounced the name right. So Yasir, for people who don't know, what was the purpose of this drive and how is it going? इस ड्राइव का पर्पस तो देखिए, हमें at the end of the day, even if we want to do a league and everything, हमें उसके नीचे एक फीडर सिस्टम भी तो बनाना था. हमें उसके नीचे वो रिसोर्सिंग भी करनी थी जहां से क्वालिटी ऑफ रिसोर्स हमें मिल सके. सो उसी को देखते हुए हमने एक चीज डिजाइन की कि यार लेट्स ट्राई समथिंग. और उसमें ड्यूरिंग दिस माइकल ओवन विजिट, सेंट पैट्रिक्स के जो चेयरमैन थे गैरेथ कैलाहार, ही वाज हियर इन पाकिस्तान एज वेल फॉर 4 days. सो अभी तो सेंट पैट्रिक्स के कोच सेपरेट से आ रहे हैं, जिसमें एक्स आयरिश कोचेस भी हैं. दे आर लैंडिंग इन नेक्स्ट 2 days एज वेल. सो दैट विल बी अनदर पॉजिटिव थिंग कैरल फ्राई के साथ साथ. अच्छा, इस सारी चीज का मकसद ये था कि एक तो ये कि वो गेटवे बनाया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली जस्ट टू क्रिएट अ लीग, और यहाँ पर लीग क्रिएट करना इज वन थिंग, बट एट द सेम टाइम वो गेटवे क्रिएट करना भी जरूरी है जिसके अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बन सके. टेक्निकली स्पीकिंग, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एट द मोमेंट. जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स हैं, आई हैवंट सीन एनी प्लेयर पाकिस्तान से जाते हुए या आते हुए जो इंटरनेशनली रिनाउंड कंट्रीज है उनके अंदर बहुत कम. हाँ, there are some British Pakistani players, they might be playing leagues, there might be some European Pakistani players, they might be playing their local leagues. लेकिन हमें वो सिस्टम क्रिएट करना है जहां से हम यहाँ की जो फुटबॉल ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपोर्ट हैं उसको भी जनरेट कर सकें. और that is a part of ecosystem as well in future. Yes, these are small bits and pieces, but इन सबको हमने फ्यूचर में अटैच करके कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना. So at the moment 20 players are going. उनमें से Karel Fry was very happy overall with the overall जो कुछ टैलेंटेड नौजवान आए. You have seen them, and for few couple of them or 2-3 ऐसे हैं जिनको उसने कहा यार I can put them in any league in the world. Wow. Not on the top leagues, but secondary any league में इनको मैं किसी में भी डाल सकता हूँ. So that is a very positive sign. और we just want to create that complete system के जहाँ पे पाकिस्तान से देखें. मैं आपको एग्जांपल दूँ, बॉक्सिंग की एग्जांपल दूँ. I remember when Amir Khan
came forward in boxing in on an international arena. Even he's a British Pakistani. He's not a like Pakistani. He's a British Pakistani. But उसका जो impact था और उसकी जो positive news थी जो boxing के followers थे globally, that is massive. That is huge. So even if we can create one player who can play up to a Premier League level or La Liga level on or who is a renowned player, just imagine the positive news coming out of Pakistan. Yeah. That will be something to follow for. That will be something to die for. Or that is the whole ambition for us कि यार football is a global sport. Billions में लोग उसको follow करते हैं. If you can create one wonder like Mo Salah, that'll be everything for you. Yeah, absolutely. So that's what we are trying. I'm not going to say it will come tomorrow. It might take a decade, but that should be our end goal. के जहाँ पे world has been changed. It's all about synergy. It's all about fifth generation war. It's creating the positive news. So we are trying to do that as well at the same time. कि और फुटबॉल अरीना में और पाकिस्तान इसके लिए अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के टैलेंट की कोई कमी नहीं है. इससे पहले भी हम आई थिंक ज़ेब ने मेंशन किया है नहीं, इससे पहले भी हम स्काउट्स ला चुके हैं पाकिस्तान. अच्छा. We've been through different areas. हाँ, इससे पहले भी हम एक दफा ला चुके हैं स्काउट्स. We've been through different areas. हमने उनको विजिट किया, प्लेयर्स को देखा और genuine like not for the trial perspective, genuine players streets पे खेलते हुए हमने विजिट्स किया. Then we realized this is something that can become, especially Liari, this is something that can become future Brazil, a mini Brazil. By the same time, पाकिस्तान में और भी ऐसे पॉकेट्स हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है. अभी वेदर की वजह से हम ट्रायल्स तो नहीं करवा सके, अदरवाइज गिलगित बल्तिस्तान huge talent is available. चमन और ये सारे जो है, yes, exactly, this region. कोयटा में बहुत हैं. लाहौर अब तो मुझे शॉकिंगली आप तो हम तो कहते थे पहले these ghettos were developed to play football, लेकिन अभी आप जाएं लाहौर में बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं. पेशावर में our coaches were shocked to see the talent. हर शहर के अंदर जो है ना वो टैलेंट सामने आया किसी न किसी सूरत में. इस वक्त हमारे लिए एक बड़ी हेडेक बनी हुई है कि 20 कौन होंगे, आगे चूज कैसे करेंगे. हाँ, और 20 कौन होंगे और वेरी टफ कंपटीशन है. बट इंशाल्लाह दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज़ एज वेल एट द सेम टाइम. Yeah, fantastic. So we are hoping some great news in coming days. फैंटास्टिक. और प्लेयर साइड से आपको क्या लगता है, रिस्पॉन्स रिएक्शन अच्छा था? डिड यू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन एवरी सिटी केम अप मोर देन यू एक्सपेक्टेड? Yes, even you know that in last जो couple of weeks से उनमें weather बहुत डिस्टर्ब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. Yes. But इसके बावजूद बारिश में भी ट्रायल्स में बुरे हालत मतलब पिचेस की असल ब्रिटिश फुटबॉल होती इसी में है ना, तो उसका प्रिपरेशन भी मिल गया है ना. वो उनको प्रिपरेशन भी मिल गया. यूरोप में खेलना कैसे है, वेदर की भी उनको सख्तियां मिल गई. बट पीपल केम आउट. नॉर्मली पाकिस्तान में आपको पता है बैड वेदर हो तो हम सारे घर में बैठ जाते हैं यार, आज चिल करेंगे आराम से पकोड़े पकोड़े खाएंगे. So but I think that is a very positive sign. So that shows that people are committed, young lads, they are very focused and they do care about their future in football. This is a very positive sign for us. Yeah, fantastic. I think one thing जो interesting चीज़ थी जिसके बारे में the press conference that GSV had, जिसके अंदर St. Patrick's was involved, Michael Owen was involved as well. So I asked this question to Michael as well about the age bracket that was decided, 16 to 28 if I'm not wrong. Do you think that this is so people have a genuine question कि क्या ये age bracket बहुत wide नहीं है? Do you not think it would be better to focus on, let's say, a younger age bracket जिधर you could pick 20 players जो अगर 3 साल में सेंट पैट्रिक्स में ट्रेन करें तो वो एक ऐसे लेवल पे जा सकते हैं कि मे बी जो 27-year-old अब मैच्योर हो गया एज अ प्लेयर वो नहीं जा सकता? I think you got a very valid point. We had a long discussions on this, and at the end of the day, we wanted to keep it wide to try to identify कुछ ऐसा talent भी होता है पाकिस्तान में कि जो they deserve a chance as well, even in local leagues and upcoming leagues. We will have emerging category, but we're gonna have other categories as well for coming up leagues. लेकिन obviously अगर आप international academies या international clubs के perspective से देखें, they like to prefer young players who got long like 5-6 years 10 years to serve कर सकें clubs को. Exactly. That is a question, but we made a decision at that time and we are keeping it that way. Okay, fantastic. And what's next in terms of the operations? Basically, आप अभी कह रहे हैं कि next few days में आप obviously finalize करेंगे. उसके बाद players, what's the timeline for them कि जो decide होगा वो Ireland कब जाएंगे, उसकी timeline के बारे में अगर आप बताएं थोड़ा.
उसमें जाएंगे तो इसी कमिंग ईयर में वी आर हैविंग अ डिस्कशन विद सेंट पैट्रिक्स, चूंकि इसके अंदर सिर्फ एक चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। Yeah. आयरलैंड की अपनी वीजा पॉलिसी है, उसमें भी डिस्कशन हो रही है। वहाँ की जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, दे बीन वेरी सपोर्टिव टू अस, वेरी काइंड टू अस। इसके अलावा आयरलैंड के जो अपने सेंट पैट्रिक्स वाले, दे आर डूइंग देयर जॉब एज वेल, वेरी वेल। सो ये सारी चीजें ऑब्वियसली हमने अभी उसके अंदर डेट्स कह चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट वन वे ऑपरेशन. St. Patrick's going to be involved as well to make the final dates. But we will be announcing those dates pretty much soon. We haven't decided yet, but it will be this year. But उसकी थोड़े अर्से में announcement आ जाएगी. Great. And this thing that you initially mentioned कि the purpose of these trials is कि आप एक सिस्टम बनाएं जहाँ पे टैलेंट जो है वो उसकी सप्लाई आए लोकली भी और ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी आप जा सकें. आई थिंक दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली इज़ इट ग्रेट टू हैव अ ग्रास रूट सिस्टम generally for any country's football development, but also, and this is something that I talked to Zeb in great detail, because this is one reservation that people have with franchise leagues कि ग्रास रूट्स पे जो है वो निगलेक्ट होगी. तो उस पर अब बहरहाल काफ़ी डिटेल्ड बात हुई थी. बट आई जस्ट वांट टू से कि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली ताकि आपकी लीग में भी सप्लाई बेहतर होता रहे प्लेयर्स का, उसकी ऑब्वियसली प्लेइंग जो फुटबॉल क्वालिटी होती है वो ऊपर जाती है, बट ऑल्सो जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड होती हैं ताकि प्लेयर्स जो हैं वो बाहर जाके खेलें. उससे एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान नेशनल टीम इन दी एंड जो है वो बेनिफिट करती है. तो क्या विल दिस बी ए रेगुलर फीचर ऑफ GSV, दीज ट्रायल्स एंड टैलेंट हंट्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड? अच्छा, इसमें ये जो आपने अभी ट्रायल्स की बात की है, इसके अंदर एक चीज तो हम इसको हम जो है वो फ्यूचर में जो है वो लोकलाइज कर देंगे विद द फ्रेंचाइज लीग ऑफ ईच सिटी. हम उनके साथ जो है वो लोकल अटैच कर देंगे, सो उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी. दे विल बी एबल टू केटर मोर प्लेयर, लोकली सोर्स कर सकेंगे. दूसरी चीज हम इसको ये करेंगे कि एक और जो चीज विच एलिमेंट जो अभी तक हमने सामने नहीं लाया वो ओवरसीज पाकिस्तानी. So we will be definitely having trials for overseas Pakistanis pretty much soon as well. Wow, that is So they yeah. got some amazing talent. I'll give you example. I'm a British Pakistani, so मैंने खुद वहाँ पर vast players देखे हैं. They're doing really well. They're playing from a very little age. Like my kids, my daughter is 8 years old. When she's in England, she goes to play football regularly. So उनकी बहुत छोटी उम्र से grooming हुई है. So there are some good players. So at the end of the day, we don't want them. They are missing out on something. We want them to be part of this whole system as well. Yeah, absolutely. I think there's a lot of talent outside, और उनके लिए तो और भी, क्योंकि वो like you said expose हुए हैं in that system of football, so they bring their expertise or their talent back to Pakistan. Just on a closing note, so that we can wrap this up, part of the Zabe episode focused heavily on PFL's plans or franchises and everything. तो उसके बाद से there's not been an update on that, and franchise announcements, Premier League clubs that were going to be partnered along with each club, dates and everything. So is there any update on that? And because people यकीन माने जो भी हम एपिसोड या कोई वीडियो निकालते हैं पाकिस्तानी फुटबॉल पे, नीचे आ जाती है कमेंट अपडेट ऑन PFL कब शुरू होगी. So people are genuinely waiting and excited to see what's in store. PFL will be this year, let me assure you, in 2022. Premier League clubs, they all are intact. There are some very big names which have added up, and we are just waiting. At the moment, we are in talks with a few franchises. As soon as कुछ उनमें से confirm भी हो चुके हैं, we are just waiting for the right time to announce them. And we want to उसके साथ जो Premier League clubs हैं, चूंकि each city के साथ हम उसको अटैच कर रहे हैं, एक प्रीमियर लीग क्लब के साथ उसको पार्टनर कर रहे हैं. So as soon as we'll start announcing them, we'll start announcing those clubs as well. But we got, alhamdulillah, for each city we got one very good Premier League club. Fantastic. And just generally, what's next for GSV? What are your future plans in this year and beyond? I think हमारे तो plan this year से ज़्यादा तो we are focusing on long-term plans. At the end of the day, हम इस लीग को वो पूरे फुटबॉल इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विद नेक्स्ट जेन फुटबॉल्स एंड एवरीथिंग. सो आई एम वेरी होपफुल के इन नेक्स्ट जो कमिंग जो 2 to 3 years हैं, we are very focused on this.
or it will be it's a huge investment for all of us. But when we look at overall return, that'll be enough for us. If we can create a couple of good players and playing in the international leagues, I think that'll be something which we are looking, and that is something that inspired us every day and every night to keep going. Yes, absolutely. I think it's also something that we as Pakistani football fans want. कि Pakistani talent is good enough to go internationally और ताकि इधर के fans भी जो हैं वो entertaining football देखें. Yasir Mahmood साहब, thank you so much for being on the show. It has been a great pleasure to talk to you. I really hope that Thank you for inviting me. I'm not a good speaker, नहीं but नहीं आप ज़हन काफ़ी काम देख करना जरूर मैं कहता आप काफ़ी जो है बीच में वो देसी एनालॉजीज वगैरह भी लेकर आते हैं, सो दैट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग. People don't usually do that. That's a great touch. But yeah, thank you so much for coming on. It was great to talk to you and get an update on what GSV have in store. For everyone who's watched, thank you so much for doing so. These are GSV's plans for this year and beyond in Pakistani football. If you haven't checked out the Zaib Khan episode, do check that out for a detailed overview of what they want to achieve overall in terms of the Pakistan Football League. This has been Pressing Matters on the mic. Do subscribe, follow us on social media, and until next time, take it easy.